हेलो डियर फ्रेंड्स, संडे एकेडमी रे आपण मान को बहुत बहुत स्वागत। आज हम स्टार्ट करबा आरआरबी एनटीपीसी आरआरबी ग्रुप डी रो जो ट्रेडिशनल जीके पीबीएस रिपीट करथले तार इकोनॉमिक्स पार्ट 9। चलो तो स्टार्ट करबा। क्वेश्चन नंबर 1 कहूची, नेम द इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन व्हिच कंट्रोल द एक्सचेंज वैल्यू ऑफ करेंसीज ऑफ डिफरेंट कंट्रीज। IMF, none of the above, फेडरल रिजर्व सिस्टम ऑफ यूएसए, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। कौन आंसर पिला माने आंसर हो आईएमएफ है। कौन ना द फिक्स मेथड ऑफ रेगुलेटिंग द करेंसी एक्सचेंज ऑफ डिफरेंट कंट्रीज वाज ब्रॉट बाय आईएमएफ है। ए फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट system is a method of regulating exchange rate based on the market mechanism that is demand and supply. Question number 2, revenue from the agricultural income tax is collected and received by local self-government, both union and state government, only the union government, only the state government. Answer कौन हो पिला आंसर हो D, only the state government. Okay, सेम जिनसो एक्सप्लेनेशन लिखा है। क्वेश्चन नंबर 3, community development program started in केवड स्टार्ट हला 1972, 1980, 52 और 56। कोन पिला मन आंसर आपन सी 52 रे हला कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम स्टार्टेड 1952। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, व्हेन वाज द कांसेप्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जोटा कि HDI इंट्रोड्यूस्ड बाय द यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। 1993, 95, 90 और 91। आंसर कौन पिला आंसर सी 1990। ओके, the human development index concept was introduced by the United Nations Development Program UNDP in 1990 with the publication of the first human development report. Question number 5, NABARD is associated with rural development, development of railways, industrial development, urban development। कौन पिला आंसर है rural development। ओके, question number 6, Paul Krugman is a और अंडर्स कौन साइंटिस्ट, स्पोर्ट्समैन, बैंकर और इकोनॉमिस्ट। आंसर हो डी इकोनॉमिस्ट। ओके, Paul Robin Krugman is an American New Keynesian economist who is the distinguished professor of the economics at the Graduate Center of the City University of New York. He was a columnist for the New York Times from 2002 to 2024. Okay, question number 7, for the existence of a market which is indispensable, banks, economics law, prices, trade unions। आंसर अपन सी prices। Okay, question number 8, mixed economy in India means coexistence of large and small scale industries, foreign collaboration in economic development, coexistence of the public and private sector, none of the above। कौन पिला मन आंसर आंसर सी coexistence of public and private sector। Okay, mixed economy in India means coexistence of public and private sector। Okay, question number 9, when national income is calculated with reference to a base year, it is called nominal national income, real national income, net national income, gross national income। कौन पिला मन आंसर बी real national income। When national income is calculated using a base year, it's called real national income or national income at the constant prices, which is adjusted for the inflation to reflect the true economic output। Question number 10, पहले मैंने क्वेश्चन नंबर 10 देखिबा। नेशनल प्लानिंग कमिटी वाज सेट अप बाय जवाहरलाल नेहरू, ए दलाल, एस बोस, एल बी शास्त्री। आंसर हो कोन पिला माने आंसर आपनकर सी एस बोस बा सुभाष चंद्र बोस। कौन ना देखिए, द नेशनल प्लानिंग कमिटी वाज एस्टैब्लिश्ड इन अक्टूबर 1938 by Subhash Chandra Bose, who was then the president of the Indian National Congress. Its main objective was to focus on the development of the industries in India. The committee was chaired by the Jawaharlal Nehru from Prayagraj। Okay, पिला माने आपण मान देखुचनी संडे एकेडमी रो YouTube चैनल। आ आपण मान को एठी जो क्यूआर कोड दिया जी आपण माने एठी स्कैन करिवे। स्कैन करले आपण को बेनिफिट कोन मिलिबो ना, आपण टेलीग्राम ग्रुप रे जॉइन हे जिवे। से जॉइन हेले आपण बेनिफिट कोन मिलिबो, आपण जेले परीक्षा पाखरे थिबा आपण माने एई सब पीपीटी रो पीडीएफ टा पाइ जिवे। पीडीएफ पाइले आपण कोन करबे ना, जेतोड एग्जाम पाखे थिबा खाली आपण स्क्रॉल डाउन कर जिवे आ आपण को बहुत मैक्सिमम बेनिफिट मिलिबो।
पिला माने आ गोटे बहुत बढ़िया अनाउंसमेंट अछि हम बखरे ओडिशा फाउंडेशन बैच जोटा कि वन कोर्स मल्टीपल बेनिफिट माने आपण मने कहंतु ओपीएस रे प्रिपरेशन करचंदी ओएसएस रे प्रिपरेशन करचंदी ओ ट्रिपल एसएस करचंदी एसएस रे करचंदी ना रेलवे करचंदी समस्त को समान मैथ अछि रीजनिंग अछि इंग्लिश अछि जीएस अछि ता सहित किछि ओपीएस रे किछि ओडिया टिके अछि आ ओ ट्रिपल एसएस रे किछि ओडिया अछि आ करंट अफेयर के जगह अछि तेणु ये सबू जाकर प्रिपरेशन जोटा कि हम कहू ओडिशा फाउंडेशन बैच वन कोर्स मल्टीपल बेनिफिट्स आर फीचर्स कोन फैसिलिटी कौन कौन मिलूँ यार पढ़ी पारे यहाँ पे गोटे ऑफलाइन बैच आउ यहाँ भी आपण मानकर कौन ना ओडिशा फाउंडेशन बैच आप मात्र 999 अवेलेबल अच्छे ना आउ लाइब्रेरी जब आप जॉइन होगा प्राइस अच्छी 499 ओडिशा भुवनेश्वर में एत सस्तार कहीं दौना पुणी से एसी लाइब्रेरी 499 आपने देखिए आम फैकल्टी टीम मानकर पोस्टर लगाई सहित आपण मैंने बेसी इनक्वारी जाऊँ निश्चित ये नंबर कंटाक्ट करेंगे नहले आपण कौन करेंगे ना यही ऑफिस एड्रेस दिखाई नयापल्ली ऑफिस अच्छी जाकि विजिट करेंगे आउ ये चैनल को प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे चलते नेक्स्ट क्वेश्चन को जाए क्वेश्चन नंबर 11 in the 11th 5-year plan which of the following sector accounts the maximum combined cultural state and UT expenditure transport energy agriculture and rural and or social sector कौन हम पिला आंसर अपन डी social sector okay. Question number 12. Which one of the following 5-year plan of India focused on growth, social justice and equity? Okay. 9th 5-year plan, 3rd 5-year plan, 4th 5-year plan or 5th 5-year plan? Answer कौन पिला आंसर है वो 9th 5-year plan. The 9th 5-year plan was started with an objective of growth with social justice and equity. The growth in agriculture also got importance in this plan. Regulation of the debt program was emphasized to improve the government's financial position. Question number 13. Which of the following 5-year plan witnessed the highest growth rate in India? 8th 5-year plan or 9th, 10th or 11th plan? कौन अच्छी ना आंसर आपन डी 11th 5-year plan. कौन देखिए तो 11th 5-year plan जोटा कि 2007 to 2012 थिला witnessed the highest growth rate in India aimed for faster and more inclusive growth though it fell slightly short of the target 10%. Okay. Question number 14. Who was the person not associated with the green revolution when it started in India? जेतबेले ग्रीन रिवोल्यूशन स्टार्टेड है से एसोसिएट नथिले कि एम एस स्वामीनाथन सी सुब्रमण्यम इंदिरा गांधी और रफी अहमद किदवाई कौन आंसर डी रफी अहमद किदवाई ओके Rafi Ahmed Kidwai was not associated when the Green Revolution when it was started in India. Okay. Question number 15. In relation to agriculture finance and refinance, which institution is the biggest? Regional Rural Bank, NABARD Institution, Central Cooperative Bank, Land Development Bank. Answer अब कौन पिला मैंने आंसर अपन और भी NABARD Institution. NABARD is a development bank responsible for the rural sector of the country. Okay. Question number 16. Who has been recently made the chairman of the work group on revision of wholesale price index services? Okay, recently means सेत्तावेलो क्वेश्चन एटा ठीक है पुराना क्वेश्चन बट जानो तो बुड़ चोरी करे सी रंगराजन पी आर पंचमुखी के सी पंत अभिजीत सेन आंसर होगा डी अभिजीत सेन. Working group will be chaired by the Professor Ramesh Chan, member Niti Aayog. Additionally, the group also suggests improvement in compliance and presentation and a recommended roadmap for switch over the WPI the Producer Private Index. सेतबेले केतले आपण मानकर केतले अभिजीत सेन. ओके. Question number 17. Physical policy is concerned with the volume of the currency that bank should put in the economy, the policy regarding the taxation and expenditure, policy for regulating stock, the policy for dealing with the IMF. Answer going to be the policy regarding the taxation and expenditure. Okay. Question number 18. The largest source of tax revenue to central government of India are Union excise duty and corporate tax, custom duty and corporate tax, union excise duty and custom duty and income tax. Answer कौन पिला मैंने आंसर बी custom duty and corporate tax. Okay. The largest source of tax revenue for the central government of India are goods and services tax in GST income tax and corporate tax. Okay.
Question number 19. The distribution of finance between the center and state is done on the recommendation of Finance Ministry, Finance Commission, Reserve Bank of India, and NABARD. Answer of answer of Finance Commission. Okay. Question number 20 देखिबा. A rise in Sensex means a rise prices of share of all companies registered with Bombay Stock Exchange, a rise in prices of share of companies registered with National Stock Exchange, an overall rise in price of share of groups of companies registered with Bombay Stock Exchange, a rise in prices of share all the companies belonging to a group of companies registered with the Bombay Stock Exchange. Answer कौन होगा? Answer आपनकर C. Okay. Detail देखिबा. A rise in Sensex means an overall rise in price of the share of group of companies registered with the Bombay Stock Exchange. ହେଲା माने एटला लास्ट क्वेश्चन. चलंतु देखिबा. पिला माने ये होची हमर संडे एकेडमी. आपण जो चैनल देखुछन सेटा आपण गोटे क्यूआर कोड मिलिछि. क्यूआर कोड को आपण स्कैन करंतु, ग्रुप रे एंटर मारंतु. सेटा आपण घर जेते सब परीक्षा बा आसुछि तार सब पीपीटी मिलि जिवो. पीपीटी पीडीएफ मिलि जिवो. से पीपीटी पीडीएफ को आपण कोन करिवे ना जेत परीक्षा पाखे आसबा खाली आपण स्क्रॉल डाउन कर जिवे. आपण बेनिफिट मिलिबो आ आपण को डिटो को एग्जाम रे क्वेश्चन आस्तिबो. बुझि पिला माने ये होची हमर गोटे बहुत बड़ा अनाउंसमेंट. ओडिशा फाउंडेशन बैच 1 कोर्स मल्टीपल बेनिफिट. आपण ओपीएससी में प्रिपेयर करछन मन कोन ओएसएससी में प्रिपेयर करछन, ओटीपीएससी में प्रिपेयर करछन, एसएससी में प्रिपेयर करछन, रेलवे में प्रिपेयर सब तो कॉमन सब्जेक्ट अछि. मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश और जीके किमा जीएस को करंट अफेयर. ओके सब तो कॉमन अछि. आपण गुट्टे प्रिपरेशन करिवे सब जगह एग्जाम कोन पे क्रैक न करिवे मत कोन. एटा होची वन ऑफ द बेस्ट इंस फर्स्ट टाइम ओडिशा इंट्रोड्यूस हेची. आ फाउंडेशन बैच प्राइस भी बहुत लो अछि 999 मात्र. आ एटा होची गोटे ऑफलाइन बैच. ता सहित लाइब्रेरी अप्लाई अवेलेबल अछि जोटे 499 अवेलेबल अछि. आ आपनकर क्लासेस पे आपण एनरोल कर परिबे. ए सब फैकल्टी मानकर एठी सब जिंस दिया हिची. बहुत भलो भलो सर मान अछि, एक्सपीरियंस सर मान अछंती. आपण नंबर रे कांटेक्ट कर परिबे, नहले ऑफिस एड्रेस विजिट कर परिबे. ठीक अछि पिला माने. क्वेश्चन नंबर डे देखिबा. Capital market means share market, commodity market, money market, all of them. कौन आंसर निश्चय हम कमेंट सेक्शन जणा. कमेंट सेक्शन जणाले हम जणा जे गोटे कैंडिडेट वीडियो देखुची ता सता ए गोटा क्वेश्चन ऑफ द डे रे भी आंसर दबा इंटरेस्टेड अछि. जदि से आंसर ठीक देतो निश्चय हम गोटे तमे हमें हार्ट स्माइली गोटे दबो. से जानि परबे जे नाइ मु जो प्रिपरेशन करछि मु ठीक अछि आ एनटीपीसी में तो बहुत भलो एलिजिबल अछि. तो कमेंट सेक्शन निश्चय कमेंट कोन आपन कोन मत कोन हम निश्चय कहबे. आ पिला माने किन लाउची वीडियो निश्चय हम लाइक शेयर सब्सक्राइब करे. वीडियो को नाइस शेयर करबे. आ सब संग मान जणेबे जे एमिटो इंस्टीट्यूशन फ्री ऑफ कॉस्ट रे आरआरबी एनटीपीसी में बहुत बड़ा बड़ा प्रिपरेशन करूछ. ठीक अछि. आज बेंटी थैंक यू सो मच.